हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम VXLAN EVPN रूट टाइप्स 4 को एक लैब सेटअप में एक्सप्लेन करेंगे और वेरीफाई करेंगे। और रूट टाइप 4 को हमने पिछले वीडियो में थियोरेटिकली समझा था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा कि आप रूट टाइप 4 का पिछला वीडियो ज़रूर देखें। उसके बाद अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ में आएंगी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो लैब टोपोलॉजी यूज़ करेंगे वो आपके स्क्रीन पे है। सो हमारे पास दो स्पाइन्स हैं, स्पाइन 1 एंड स्पाइन 2, और हम तीन लीफ यूज़ करेंगे। लीफ 1 with router ID 3.3.3.3, leaf 2 with router ID 4.4.4.4, leaf 3 with router ID 5.5.5.5, और जो स्पाइन्स के रूटर आईडी हैं वो है 1.1.1.1 एंड 2.2.2.2 फॉर स्पाइन 1 एंड स्पाइन 2 रेस्पेक्टिवली। और जो हमारे क्लाइंट्स हैं या एंड होस्ट्स हैं वो है सर्वर 1, सर्वर 2 और सर्वर 3, बट इस वीडियो में हम जो वेरिफिकेशन करेंगे वो सर्वर 1 और सर्वर 2 के बीच में करेंगे। So friends, let's now understand step by step the process to configure EVPN multi-homing on a pair of Nexus 9Ks. तो जो पहला कमांड हम एंटर करते हैं to enable EVPN multi-homing is the command which says EVPN ESI multi-homing. ये एक global configuration command है. So that's the command that we enter. It's EVPN ESI multi-homing. और ये कमांड multi-homing को globally enable करता है on the switch. Also under the interfaces facing upstream towards the VXLAN fabric or towards the spines. So under the interface that faces towards the VXLAN underlay or the VXLAN fabric, तो हमारे केस में ये interfaces होंगे ETH 1/1 and 1/2 on both leaf 1 and leaf 2. We need to enable EVPN multi-homing code tracking. So हमें ये command which says EVPN multi-homing code tracking enable करनी होगी, और ये command uplink interfaces को track करता है. तो in case किसी leaf switch से सारे uplinks अगर down हो जाए तो ये leaf switch अपने southbound या endpoint को फेस करते हुए जो Ethernet segment या port channels होंगे उसको shut down कर देगा to avoid black holing. तो अगर हम इसे अपने टोपोलॉजी के थ्रू समझना चाहें तो फॉर एग्जांपल लीफ 1 के अपलिंक पोर्ट्स आई ETH 1/1 और 1/2 अगर डाउन हो जाते हैं फॉर सम रीजन, लीफ 1 अपने साउथ बाउंड या इंटरफेसेस फेसिंग द एंड पॉइंट्स उन पोर्ट चैनल्स को शट डाउन या सस्पेंड कर देगा to avoid traffic black holing. And once we have enabled EVPN multi-homing code tracking under the uplinks, the next thing we need to configure is the port channels facing the endpoint, जो हमारे केस में server 1 VLAN 10 है. So we will configure the physical interface as a member of the port channel using LACP with the command channel group 12 mode active. Again, ये port channel ID कुछ भी हो सकती है, और फिर हम port channel के अंदर Ethernet segment configure करते हैं, और ये Ethernet segment ID आप कुछ भी ले सकते हो as long as ये ID same है on both the leaf switches or howsoever many leaf switches you have. So the main point is the port channel configuration on both leaf 1 and leaf 2 must be identical. दोनों में ये configuration same होनी चाहिए. Okay, and now we will do some verifications on these leaf switches. So let's go to the leaf switches and do some verifications. तो जैसे कि हमने देखा, जो हम इंटरफेस यूज़ कर रहे हैं टू कनेक्ट टू सर्वर 1, इट्स Ethernet 1/3 ऑन बोथ लीफ 1 एंड लीफ 2। तो अगर हम उसका कॉन्फ़िगरेशन चेक करें तो वो एक पोर्ट चैनल का पार्ट है, पोर्ट चैनल 12। अगर हम पोर्ट चैनल की कॉन्फ़िगरेशन देखें, शोर ऑन इंटरफेस PO12, हमने इस पोर्ट चैनल को एक ट्रंक बनाया है, और जो ईथरनेट सेगमेंट आइडेंटिफायर की कॉन्फ़िगरेशन है वो
कुछ इस तरह से हम कॉन्फ़िगर करेंगे। ईथरनेट सेगमेंट 12 की आईडी आप कुछ भी असाइन कर सकते हो एज लॉन्ग एज वो दोनों सेम है ऑन बोथ लीफ 1 एंड लीफ 2। और इसे हम एक सिस्टम मैक असाइन करेंगे और ये सिस्टम मैक दोनों लीव्स पे सेम होगा। लेट्स वेरीफाई दैट ऑन लीफ 2 एज वेल। तो अगर हम लीफ 2 पे इसकी वेरिफिकेशन करें तो हम देख सकते हैं कि इंटरफेस PO12 हमने इसे भी एक ट्रंक कॉन्फ़िगर किया है विद ईथरनेट सेगमेंट 12 और सेम सिस्टम मैक। सो फ्रेंड्स, अगर हम लीफ 1 और लीफ 2 पे रूट टाइप 4 की वेरिफिकेशन करें, सो द कमांड दैट वी रन इज शो NVE ईथरनेट सेगमेंट। और अगर इसका हम आउटपुट चेक करें, सो द फर्स्ट थिंग दैट वी सी इज द ESI वैल्यू। और जो हमने वैल्यू कॉन्फ़िगर की थी, it is the value here ending with 0012, or like we see we have the parent interface which is interface PO12 जिसके अंदर हमने Ethernet segment identifier configure किया था। We see the port channel status is up, NVE is NVE1, NVE state is up, और जो active VLANs हैं it's the one listed on the screen, or this leaf switch is the DF or designated forwarder for these VLANs, which are 10, 20, 500 and 1234, or based on the formula that we previously discussed, it is the VLAN ID mod the number of leaf switches in the redundancy group. तो हमारे केस में अगर हम VLAN 10 for example लें, so it will be 10 divided by 2 will give us a mod of 0, and 0 is the ordinal value of leaf 1. तो जितने भी VLAN होंगे with even VLAN ID, they will have leaf 1 as the designated forwarder. So that's why we see here that leaf 1 is the designated forwarder for VLAN 10, 20, 500, 1234, and these are all even VLANs. और अगर हम इस लीफ पे रूट टाइप 4 की एंट्री चेक करें, so let's do a show BGP L2 VPN EVPN Route-Type 4, तो हम देख सकते हैं कि from the remote leaf switch with the route distinguisher 4.4.4.4 जो कि हमारा leaf 2 है, उससे हमें 2 BGP अपडेट्स रिसीव हुए हैं। 2 हमें इसलिए होंगे रिसीव क्योंकि हमारे पास 2 रूट रिफ्लेक्टर है, स्पाइन 1 एंड स्पाइन 2। और जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि बेस्ड ऑन द ईथरनेट सेगमेंट आइडेंटिफायर, जो प्रोवाइडर एज स्विचेस हैं, दे विल जनरेट एन इम्पोर्ट रूट टारगेट विच इज़ द वैल्यू दैट वी सी हियर। और ये रूट टारगेट वैल्यू दोनों लीव स्विच पे सेम होगी, like we see here. So this is the route distinguisher of the local switch 3.3.3.3 जो कि हमारा लीफ 1 है, और उस पे जो रूट टारगेट जनरेट हुआ है वो सेम है as what we received from leaf 2, and that's the reason leaf 1 will import that BGP update in its BGP routing table, and that's how leaf 1 will now know key for this particular Ethernet segment there is another leaf switch that is connected to the same end device. And likewise, if we do the same verification on leaf 2, तो हम देख सकते हैं कि इसकी जो ordinal value है, it's the value 1. We have the same Ethernet segment identifier configured. We have the parent interface PO12 which is up, NV interface status is up, or active VLANs हैं, it's these VLANs here 1, 10, 20, 500, 999 and 1234, or ये switch is the designated forwarder for these 2 VLANs. और अगर हम इसकी calculation करें तो the way we derive that is again V mod n, or n key value, as we see the number of Ethernet segment members is 2, so any odd VLAN will have a mod of 1, and we have the ordinal value of leaf 2 as 1 like we see on the screen. Or
We also see the DF list, which has leaf 1 and leaf 2. So this Ethernet segment has two members, and these two are the member IPs. So this is the process of designated forwarder election on the leaf switches. और जैसे कि हमने verify किया, for all the even VLANs, leaf 1 with ordinal value of 0 was the designated forwarder, or for all the odd VLANs with ordinal value of 1, leaf 2 was the designated forwarder. I hope the designated forwarder mechanism is clearer now. So friends, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए with your friends and colleagues, और कोई भी कमेंट हो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में अपडेट कीजिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए on Buy Me a Coffee. The link is in the description. My friends, thank you very much for stopping by today, and I will see you in future videos. Thank you.